राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फूजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निसर्ग उपचार अर्थात प्रकृति चिकित्सा। निसर्ग उपचार, ठीक है। निसर्ग उपचार ये क्या होता है? नेचुरोपैथी जिसे हम कहते हैं। नेचुरोपैथी एक ऐसी साइंस है या सिस्टम है ऑफ health believe in the natural way of healing. It means body has the capacity to heal itself. मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो खुद को खुद ही हील कर लेती है। दिस सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म इज प्रमोटेड बाय द यूज ऑफ नेचुरल मेजर दैट इज फूड, वाटर, मड, सनरेज, फास्टिंग, मसाज, रिलैक्सेशन एक्सेट्रा। प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास। तो क्या है प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास? देखो, the physiology of naturopathy was first used in Hippocrates School of the Medicine in 400 BC. They used a Latin term Visimedrex nature, which means the healing power of nature. ठीक है, उसके बाद क्या है? The term nature cure was given in 1895 by Dr. Jens Sahel of New York. The term naturopathy was given in 1902 by Dr. Benedict Lust in USA. ठीक है, Adolf Just in 1859 to 1936 was a famous naturopath who wrote the book Return of the Nature. Vincent Prendivitz from Australia is the father of naturopathy. He treated the people naturally in his own principle. Liu Kunhe from Germany is father of hydrotherapy, and Mahatma Gandhi ji was the person who initiated and promoted the naturopathy in India. Aim and objective of naturopathy. The aim of naturopathy is to attain the positive health and cure the disease by means of natural principle by use of sun rays, water, earth, food, fasting, massage etc. इनसे प्राकृतिक रूप से चिकित्सा की जाती है, वही नेचुरोपैथी कहलाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। All the disease, their cause and treatment are one of the except for traumatic and environmental condition. The condition of all disease is one, that is the accumulation of the morbid matter in the body. The treatment of all disease is the elimination of morbid matter from the body. अगर इसे आयुर्वेद में देखोगे तो दोषों का क्षय और बढ़ जाना, वृद्धि होना, और वैसे देखोगे तो फॉरेन बॉडी का कोई भी हमारे मॉर्टर में अंदर आ जाना। नेचर इज द ग्रेटेस्ट हीलर। नेचर सबसे अच्छा हीलर है। द ह्यूमन बॉडी इट सेल्फ हैव द हीलिंग पावर टू प्रिवेंट इट सेल्फ फ्रॉम डिजीज एंड रीगेन हेल्थ इफ अनहेल्दी। नेचुरोपैथी ट्रीट्स द बॉडी एज होल. It is not the disease but the entire body of the patient which is cured and renewed. The suppressed disease are brought to surface and are removed permanently. Exercise or physical activities keep the balance. All the aspects like physical, mental, social and spiritual at the same time. Performing prayer according to one's spiritual faith is an important important part of treatment. Importance of 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचुरोपैथी। पंचभौतिक्स्म, ठीक है। तो इंडियन स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी क्या प्रोसीजर है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। तो अर्थ से क्या होता है? मड थेरेपी। जल से क्या होता है? हाइड्रोथेरेपी। फायर से क्या होता है? हेलियो या सन थेरेपी। एयर से एयर बाथ और स्पेस से फास्टिंग, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी। तो इम्पॉर्टेंस देखो, प्राइम इम्पॉर्टेंस of naturopathy is that it uses the nature as healer, so the therapy is costless or cheap and there is no side effect as seen in the use of modern drugs. In modern therapy the disease is suppressed, later it becomes chronic. In naturopathy the disease is cured slowly and from the root, मतलब जड़ से ही हटा दिया जाता है। In nature cured the patient get power to detoxify the morbid matter collected in the body which causes the disease. Relation of Ayurveda and naturopathy. Ayurveda can be composed to naturopathy. There are some similarities and similarities between the two holistic approaches of the medicine. What is the considered natural in naturopathy and Ayurveda? Naturopathy utilize the ingredient of nature, earth or mud, water, sunlight or other forms of heat, fasting, fruits and vegetables.
These substances are used because they are found in nature. Naturopathy considers these as natural for our body healing. Holistic Ayurvedic medicine consider the balance of humors, Vata, Pitta and Kapha, seven tissues and sub-tissues. The metabolic and excretory substances are the other good qualities with innate universal appeal and considered natural for our mind. Healing in naturopathy in Ayurveda, both system appreciate the natural tendency of our body to heal out. Remedies and procedure help to support our inner core to recover to its ability to heal the body and condition. Naturopathy emphasize the vital force and its ability to heal the body and mind. Ayurveda further assists the inner vital forces by actively restoring the imbalance in our tissues and for humors, and be actively detoxify the body, mind and psychological health in naturopathy and Ayurveda. Concept of mind and consciousness and its integration with the body is the one of the fundamental feature of naturopathy as well as Ayurveda. As we have Ayurveda body types based on three humans of those, there are three different minds टाइप्स इन आयुर्वेद बेस्ड ऑन थ्री प्राइमरी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. कौन से हैं वो? मानसिक और शारीरिक दोष. ठीक है, शारीरिक दोष हो गए वात पित्त कफ, मानसिक दोष हो गए रजतम और सत्व. ठीक है, सत्व रज और तम. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिकोटॉक्स इन नेचुरोपैथी एंड Ayurveda. So our body is constantly detoxified every day through sweating, breathing, passing urine and stool, and sometimes vomiting and diarrhea. The detoxification is going on the cellular level, tissue level, organ level, and at the level of whole body. Naturopathy assists this process of natural detoxification. It's a different modality of treatment as fasting, diet or organic food, sweating, cold and hot temperature, mud therapy, sad bath and massage for correcting the imbalance of the humor and restoring the health. The Ayurvedic Panchkaram therapy goes one step ahead and deals with the impacted humor in the deeper level of various tissue. It is facilitated or induced detoxification of Ayurvedic medicine, prevention and health promoting measures in naturopathy and Ayurveda as well as naturopathy can be used even when the person is healthy or to prevent any particular disorder to which a person is subject. In Ayurvedic medicine, सब regenerative जो आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी है goes one step ahead and deal with the impacted tumors in the deeper level of various tissues. It is facilitated or induced detoxification of Ayurvedic medicines. Next step, prevention and health promotion measures in naturopathy and Ayurveda. क्या क्या प्रिवेंशन है और नेचुरल मेजर है नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद में? तो क्या है, आयुर्वेद एज वेल एज नेचुरोपैथी कैन बी यूज इवन व्हेन द पर्सन इज हेल्दी और टू प्रिवेंट एनी पर्टिकुलर डिसऑर्डर टू विच अ पर्सन इज सब्जेक्ट. Well, in Ayurvedic medicine, some rejuvenative remedies are described that are used to promote overall health or health of a particular organ or to correct a particular condition as known as the name by रसायन. ठीक है, कोई भी चीज़ से हम इसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोपैथी यानी कि जल से हम चिकित्सा कैसे करते हैं. तो ये नेचुरोपैथी हो गया, इसकी अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे. ठीक है, नेचुरोपैथी का जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ ख़त्म होता है पर नेचुरोपैथी ख़त्म नहीं होती क्योंकि अभी इसके कई सारे मेजर्स और ट्रीटमेंट्स वगैरह रह गए हैं. ठीक है, तो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है.